So we're talking about like method hiding, and we said if this is a static method, हमने फिर क्या discuss static? हाँ, static हमने किया है discuss. That if it is static, it will hide that we call method hiding. Okay, it will not override, it will rather hide if it is a static method. And then there is shadowing. Shadowing simply है कि अगर आपके पास एक for example ये method है यहाँ पे, for example आपका इस क्लास में, चलिए यहाँ पे क्लास बनाते हैं, दूसरा क्लास बनाएंगे, क्लास shadow. ओके इसमें एक ये तो पता ही है आपको है, ये तो सिंपल ही है, int फॉर एग्जांपल num है मेरे पास, integer num. ओके एंड देन इफ आई हैव हियर अ मेथड void display, मैं इसको भेज रहा हूँ int, यही num भेज रहा हूँ मैं, यानी कि सेम नेम का भेज रहा हूँ मैं. So if I try to access this num, now this class shadow has got two nums. This is the instance variable of it, and then the local variable. Now local variable shadow the instance variable. If you say here num, it will not be this num, the line number 54. It will be actually this num. Okay, if at all you have to discuss 54 num, then you have to say this dot num. Okay, you cannot access it using the num, because the num is a local variable. It will shadow the instance variable. This is called shadowing. This is called what? Now if I use this thing, I can have I can use this dot num to access it. If I say num in this method, the local variable will shadow the instance variable. This is called shadowing. Next is, after shadowing, there is one thing what is called as obscuring. In obscuring, what we do is, if you create some instance variable same as that of a class, say for example you have here int system. सर shadowing थोड़ा repeat कीजिए आप. shadowing में तो कुछ खास है ही नहीं. shadowing में क्या करता है काम की, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास local variable है कोई, ये ना local variable int num, या अगर इसके पास उधर नहीं होता तो इसके अंदर हमने एक variable कोई डिक्लेयर किया होता इस मेथड के अंदर, या हमने इस मेथड के साथ ही यहाँ पे कोई वेरिएबल दिया, वो सेम नेम का दिया जो कि हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है यहाँ पे. ठीक है ना, जो क्लास शैडो है, ये मेरा क्लास शैडो है ना यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, इसके अंदर एक वेरिएबल है नम. ठीक है वर्षा, माइक खुली रखो. शैडो के अंदर एक वेरिएबल क्या है? नम. अब मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ वाइड डिस्प्ले. ठीक है, और इसको भी मैं एक वेरिएबल, इसको पैरामीटर देता हूं, दैट इज इंट नाम, लेकिन उसका नाम सेम है जो इसका नाम. ठीक है, नाउ इफ इन दिस मेथड आई एक्सेस नम, अब मसला है कि ये कौन सा नाम की बात हो रही है, इस नाम की बात हो रही है या इस नाम की बात हो रही है ना. इफ यू जस्ट क्लिक ऑन इट, इट इज शोइंग दिस, हाईलाइट दिस वन, ये इसकी बात हो रही है, क्योंकि इस नम ने, लोकल वेरिएबल ने जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको शैडो कर दिया. है ना, दोनों है उधर. ठीक है, ये दोनों है उधर, लेकिन इस नम ने इसको कहते हैं कि शैडोइंग. जस्ट वी कुड हैव सेड इज हाइडिंग आल्सो, बट दे आर कॉलिंग इट शैडोइंग. ओके, बिकॉज़ इट इज विद इन द सेम क्लास. बिकॉज़ हाइडिंग अक्सर हम क्या करते हैं विद इन द टू क्लासेस, व्हेन देयर इज इनहेरिटेंस, कि यहाँ से बंदा आ गया, फिर इसने ये वाला नहीं किया, ये वाला किया, पेरेंट क्लास का किया, चाइल्ड क्लास का नहीं किया, जैसे स्टैटिक में हमने देखा. सो दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएबल हाइडिंग. बट विद इन द सेम क्लास, if you have a same name variable and then there is a method inside, there is also a s variable, or you could declare here some int num, for example. Okay, inside I am declaring a num. ठीक, say I'm not doing it here, I'm doing it within the method, I'm declaring a num. ठीक, because I am declaring a variable num within this method only. ठीक है, this num is not same as that of the above num, which is the class variable. ठीक है ना, so this is different, this is local variable, because this num will be created within this method, and when this brace hits at 59 it will be killed. कैसे स्कोप सिर्फ ये है ना,
Now, Yes, sir. but at the same time we have this num also there. Now जब मैं यहाँ पे num करता हूँ ये confusion नहीं दिखा रहा because ये यहाँ पे जो local variables होते हैं वो shadow करते हैं ऊपर वाले को. If at all you have to access this num outside जो आपके method के outside num है, then you have to use this keyword. This dot num. It will tell us कि भाई मैं local variable num की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं instance variable num जो बाहर था, ठीक है? So अगर मैं यहाँ पे num कह रहा हूँ, so this num will shadow this num so that we will not have any confusion कि अगर मैं यहाँ पे कहूँगा sop num करूँगा मैं यहाँ पे system.out.println करूँगा num. So ये मिस कैसे confusion की इन compilers की शायद करूँ हुकिन में ये कैसे मैं करना ज अकीन आवे, ठीक है? इतने में फरशाच में नाम अख variable, ठीक है? ये कॉलेज में मगर ब्याख फरशाच में MCA classes में ब्याख फरशाच कॉलेज फरशा ये भी classes अंदर चुस ये भी classes में MCA class बिस में फरशा में शुन confusion की इन की माचे हो फरशा BCH फरशा माचे ये शुन confusion की इन कैसे within the class चकरक shadow हो वो चे फरशा कोर shadow को फरशा ये BCH वो BC तो अगर मैं सु access करेंगे class variable में तो मैं लगाऊं this keyword, ठीक है? If I am saying not Farsha, I am saying this dot Farsha. That means I am not talking about you. I am talking about that girl. But within the class, within that, when you say MCA class, you say method. Within the method, agar Farsha sona, it is you only. I don't have any confusion. So this is if you are hiding something within the same class, then this thing will be called as shadowing. What we call as? ठीक है? Yes, sir. Now what is obscuring? We got the shadow. We got now say obscuring. Which one करा काम इतना आप चीज मैं कोर इतना integer variable create of type system. अलग जो गाल थी कि इसकी firstly the s should be small. If a variable name should be small. मगर मैं कोर this thing as a system. But I know system is a class. यानी कि जो एक class था उसी नाम का मैंने variable बना दिया. ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे कहूँगा system dot out dot println और मैं कुछ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? Now it has a problem. Why? You might need there is some syntax there also. Maybe I'm printing here something. Hello. Okay. Now if I see it, there will be a lot of problems here. But one of the problems should be कि भाई ये क्योंकि मैंने system जो किया यहाँ पे एक variable declare किया. Now it will be confused कि भाई ये system जो है it will take it as this system as this variable, not as a class now. ठीक है? And it will say कि भाई साहब ये system के साथ ये out कहाँ से आ गया? क्योंकि now in this class I am having this system as what? As an integer variable. Say for example, I do it in a white display. ये एक method है white display, इसके अंदर ही मैं करूँगा ये चीजें. ठीक है? मैंने यहाँ पे एक integer variable system बनाया. ठीक है? उसके बाद अगर मैं कहूँगा system is equal to 20, for example, I say system equals to 20. It doesn't have any issues because system एक local variable है जो integer type है. The moment I do system.out.println, now it will tell me कि ये भाई out कहाँ से आ गया? The primitive type int of system does not have a field out. ये out किधर से आ गया? Because it doesn't take it now as a class. It take it as this integer variable. Does it make sense? So this thing is called as obscuring. This thing is called as what? Obscuring. That means if you create a local variable integer, same name as that of a class, okay, then it will be called as obscuring. So you are not allowed actually to do that, but you can do that, but you cannot use then that class name. You cannot use SOP here now, for example. Then it won't have any issues. But the moment you use the SOP, then it will say bhai ye out kidhar se aa gaya, because it will not take this system as a class now. It will take system as this local variable. Okay? This is called as obscuring. That is all for this. Now let us go for the new class here. New class called as abstract. We'll go for abstract class. ABSTR
ACT, abstract. Now we have the abstract classes. Okay. Now what is an abstract class? Now you guys should be telling me, rather than, because pre-class video means you are talking more than me. The pre-class video means you are talking more than me. I'm talking less, you are talking more. You understand? Yes. What do you think about the abstract class? If I have, yes, if I have an abstract, very good. Abstract, we have an abstract class, say for example, person. Like we studied yesterday that we have a person class which is abstract. Now, firstly, abstract class, can it have a variables, so concrete variables like int? For example, I'm saying int, or I could say here string name. Can it have these things? String name? Yes, it can have any local variables. Okay, instance variables. We don't call them local variable. Local variable, we call them which are inside the method. Okay, we call them local variables. But when the variables which are in the class are called as instance variables, because they need an instance of the class to create them. Okay, local variables are called when they are inside a method, because they will be created when method is called, and they will be killed when the method is done. Now, can it have the name? Yes, it has. Can it have, if you see the C++, there is little different little concepts, like there should be the pure virtual function. If a class has a one pure virtual function, it will be an abstract class, right? That is different than here. Here we have a keyword abstract. In your C++, there was not a keyword abstract, there was pure virtual function, because they will do using the virtual function and pure virtual function, these things. You know that thing. Now, this is my abstract class person. And there is one more thing called the interface. Now, interface, if I say here interface, like for example, this is interface. Interface का मैंने वीडियो आपको दिया क्या? INTF1, for example. This is my interface. Okay, and I am trying to create some variable here. Okay, this will straightway show me error. You cannot create any normal variables here, which you can do it here in abstract class. You cannot do it here, because interface is 100% abstract class. Okay, got it? What can here be? There can be, if I do like this, then it won't have a problem. Okay, then it won't have a problem. We will talk about interface later. Okay, better first talk about the abstract class only, because interface is a little different. Now I am saying that we have an abstract class person, is a string name. That abstract class should have an abstract method. Say I'm saying abstract abstract, that I'm using, say for example, get details. Maybe I have get details method, and this method is abstract. When this method is say for example is returning the string. Okay, now this method is abstract. What does this mean? Means that method is abstract. Who will tell me? Starting from Arshin. I'm saying this method is abstract. What does it mean, this method abstract? Arshin Manzoor. Sir, abstract class के अंदर है ये abstract method. Leave the abstract class. इसके जो class होगा उसका कोई object नहीं होगा. Class की बात नहीं कर रहा हूँ, method की बात कर रहा हूँ. Have you not watched the video? सर इसकी कोई implementation नहीं होगी. Very bad. किसकी implementation नहीं होगी? सर abstract method की. मतलब? Sir, it will not have an implementation in this class. मतलब हमको ये जरूरी करनी है override. सर ये override child class में जरूरी करनी है. सर अगर इसको दानिश फयाज ने ठीक बोला, इसने गलत तरीके से बोला, लेकिन बोल रहा है ठीक. That he want to say is we cannot define it here. Yes, sir, we have to define it in another class. Child classes. Yes. I have given you the pre-class video. If you're not watching that, what is the fun? Why are you so lazy? This is strange. And this is 2 days back I gave those videos.
abstract string get details. When I say there is a method abstract method, it cannot have a body. I cannot start giving a body to it. Okay, it is straightway having an error. Why? It's telling me abstract method do not specify a body. If it is an abstract method, you cannot have a body here. You can just a prototype kind of a thing, which you do in a C, prototypes. Okay. And where you have to define it, it is to be defined or implemented by whom? By the child class, by the child class. But it can also have the concrete methods. Like maybe I say string show name, SHO, show name, and this show name actually returns me the, it will return me the name. Maybe I call it return name. Now this is a concrete method. Now this is a concrete method, means a concrete method means which has the body, which has the name and also the body. Abstract method is which is only the prototype, no body. Body is to be defined by the child class. It is the contract between the abstract class and the child class. This is a contract. If somebody is a child of this person class, if at all it extends, if some class extends the person class, then it is the job of that class to give the body to this get details, to override this method. You could say like that, to override this method, to give body to it. Sajid Mushtaq and Wajid Hussain, open up your cameras or I have to remove you guys. Now, but abstract class can have a local instance variables. It can have a concrete method. It can have an abstract method. That is why we have interfaces which do not allow any of such things. We'll talk about them tomorrow. I may give you the pre-class video also so that you will be prepared for tomorrow. I have created 5-6 years back a video that the video which I have created, these abstract and this I was doing myself MCA. You understand? So I created videos, these videos when I was doing myself MCA, because I was teaching that time also. So you are also doing MCA. String show name. Now this string show name is like abstract method or concrete method? What is it? Concrete. It's a concrete. Why? Because it has the body. Abstract methods do not have the body. Do you understand what I'm saying? Nice. Now the second thing is that if I want to create an instance of this person class, I say person, person, I want to create an object of type person P equals to new person. Is it allowed? It should be error. Why is it showing error? What is it saying? Cannot instantiate the type person. Why? Because abstract methods cannot be instantiated. जुनैदा शौक समझ आ रही है बेटा? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, सुनो मेरी बात, मैं प्री क्लास भी दे रहा हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा फिर भी कोई मसला नहीं है, हम एक दिन रिकैप का रख सकते हैं, मतलब ज्यादा रिकैप सारे. Fahim is a one student here who is talking and all, but rest of you are not talking. अगर आपको अभी लेवल वो नहीं आ रही है तो लेट अस वर्क हार्डर ना, लेट अस वर्क डिफरेंट वे. कोई मसला ही नहीं है, 1-2 दिन रिवीजन का कर लेंगे, क्वेश्चंस आपके आंसर कर लेंगे. हमें कौन समय तो बहुत सारा टाइम है, आपको समझ आ रहा है, लेकिन मेक इट श्योर दैट यू आर लर्निंग. अगर समझ नहीं आ रहा है किसी भी सूरत, अब पूछो, डू यू अंडरस्टैंड? जैसे फरशा ने भी एक सवाल पूछा, दैट्स वेरी गुड, डू इट. तो मैं कह रहा हूं कि जब मैं एक पर्सन क्लास को एक क्या करूंगा काम, यहाँ पे क्रिएट करूंगा ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर्सन, दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास का काम ही नहीं है कि उसको आप इंस्टेंशिएट करो, वो अलाउड ही नहीं है. क्यों? क्योंकि अक्सर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम उसको रखते हैं जो सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए लगेगा हमें, जिसमें वो चीजें होंगी जो कॉमन होगी सबको. जैसे मैं स्टूडेंट क्लास बनाऊंगा या टीचर क्लास बनाऊंगा, यहाँ पे आई विल मेक अ क्लास स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, and it will extend
person. Now I am having a student class which is extending person class. Then I may have a class teacher which will extends person. But if you're not watching the pre-class video, then it's really sad. Okay, is my voice coming? Because मेरे इंटरनेट में कुछ परेशानी थी, मैंने एक्चुअली कजिन का इंटरनेट चल रहा है, उसी से किया ज्वाइन, हमसायों का इंटरनेट, फिर से लाइक दैट। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? सर बीच में ये बीच में कट रही है, बीच में कट रही है ना, क्योंकि दूर थोड़ा सा। मैं अपना एयरटेल करूंगा ट्राई फिर से कनेक्ट करने की। There is some issue, बारिश में हो जाता है ये। Now my Airtel is connected. Is my voice clear? Is my voice clear? yes sir, Okay. I have actually access to the whole area internet. There is a lot of, I could use any network. This is, I have passwords of each and everybody's passwords, but legal way, not illegal way. Because what you do is you drug them and then tell them ki password kya hai. Then they tell you the password and that is it. Anyways, now class student extends person, class teacher extends person. Now it is both showing an error. Why would it show an error? Who will tell me? Because there's a contract. You have to fulfill that. If you are the bacha of this person class, तो बोले तो इसका contract तो fulfill करना पड़ेगा ना? जो तूने इधर, जो तूने body इधर रखी, हाँ, दानिश, yes, what? जो body करके implementation देनी पड़ेगी. So we have to define the body of the get details here. That is, in technical terms, we don't call it implement. Okay, we do not say it implement, we say it override. We have, because implement is used with the key, it's a technical term, implement, that is to be used with the if you say implement, that's to be used with the interfaces. Technical term, implement. Now here this get detail has to be overridden by the student class. This get detail has to be overridden by the teacher class also. That's an error. So I will tell him to do it for me. So I say add unimplemented method. Here add unimplemented method. We call it as override. Okay, this is an overriding of the get details. And you use the key, this thing here, @override. This is used for the documentation, Java doc, because the whole documentation is created, no, technical documentation is created of this project. That's called Java doc. And that is, these are used there. So this is an overridden method. Okay. Now what are we doing is we are implementing this get detail within the child classes. And it's a contract, you have to do it. You have to create the body of this get details within the student class. Now, can we create the instance of this person class? No, sir. We cannot. So can we have then a constructor? So I'm saying this is my class person is abstract, and here I'm having a name. This is a normal variable. I'm having a concrete method, but I'm having an abstract method also. So abstract method bolito, this is to be overridden by the child class. But question is, can I have a constructor here? Because Sir, I think we can create. you say we can create, but why we create? Because this class person is never to be instantiated. When we use a constructor, what for we use a constructor? To create an object of it, right? So Saifullah, are you guys there? Saifullah, Sophia Altaf, Sajid and Shah Zubair, open up camera. Saifullah, I'm saying, can this class person be instantiated? Yes or no? इसकी खुद की इंस्टेंस कहाँ होगी? इसको तो जो इंस्टेंस मिलेगी वो थ्रू सब क्लास मिलेगी, जो इसका चाइल्ड क्लास है उसके मिलेगी, और इसमें जो भी मेथड्स है वो तो इसमें डिक्लेयर करते हैं, लेकिन फिर जो उनकी इंस्टेंस बनती है वो सारी सब क्लास में ही बनती है. वेरी गुड. सो क्या फिर मैं इसको कंस्ट्रक्टर दे सकता हूँ यहाँ पे?
सर वो जब इसमें कोई इंस्टेंस ही नहीं रहेगी तो इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास कोई चीज ही नहीं है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हम रख सकते हैं बट उसमें इनिशियलाइज करना किसी चीज का फायदा ही नहीं होगा। Let us discuss this. What do you say, Arshin, Manzoor, about it? Arshin, you have got a mask, so you don't need to hide yourself or something. And this is YouTube and all. If सर you में put it, फोन होता है ना वहाँ यहाँ। सर भी मुझे भी लगता है इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसमें हमें इनिशिएट करना पड़ेगा और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इनिशिएट नहीं करते हैं। instantiate. We cannot create an object of an abstract class. That is true. But I am saying, like Danish said, that we can have a person constructor here. We can. This is allowed. We can put up a person constructor, and even we send something to it. Yes. The main function तो कंस्ट्रक्टर का होता है ना कि हम उनसे इनिशियलाइजेशन करते हैं जो भी हमारे Okay. पास डेटा Okay. मेंबर्स। I am sending it string name. Okay, I'm creating a parameterized constructor here, and it is allowed because abstract class का खुद कोई object नहीं बनेगा। ये inheritance के लिए है ना? किसके लिए है? ये inheritance के लिए है, ठीक है ना? ये abstract class है, इसमें 10, 15, 20 चीजें हैं, इसका object नहीं बनेगा। ये बाकी जो नीचे वाले क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, इसका नहीं बनाएंगे। लेकिन ये किसके लिए है? इनहेरिटेंस के लिए। लेकिन क्वेश्चन है कि अगर ये वजूद में नहीं आया, अगर ये वजूद में, क्योंकि अगर मैंने इंस्टेंस की नहीं बनाई तो ये वजूद में नहीं आएगा ना। अगर ये, आर यू गाइस लिसनिंग मी? बिकॉज़ इट्स स्टॉपिंग, वीडियो इज स्टॉपिंग। एम आई ऑडिबल? डैम, इंटरनेट तो कनेक्ट है। एम आई ऑडिबल? कैन एनीबॉडी कंफर्म? एम आई ऑडिबल? सर आवाज नहीं आ रही है, माइक म्यूट है। सर म्यूट। Okay. Am I audible now? यस सर। Yes, sir. Okay, there's some internet issues. I got switched back to my neighbors. Okay. So what I'm saying is कि मैं कह रहा हूँ कि abstract class है, इसका कोई ये नहीं बनेगा। लेकिन abstract class के अंदर हमारे पास सारे variables हैं, इसके पास concrete methods भी हैं, इसके पास बाकी चीजें भी हैं, ठीक है? अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, क्या ये वजूद में आएगा? इसमें स्टैटिक तो कोई नहीं ना। अगर स्टैटिक होता तो वो दूसरी बात थी। फिर इसमें स्टैटिक नहीं है, कोई नेम है, स्ट्रिंग नेम है। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ही नहीं तो क्या ये वजूद में आएंगे? सोचने की बात है। नो सर। It cannot come into vogue. You cannot have the string name somewhere if you don't create an object. Because if it's a parent class and student is a child class and you create, for example, of type student some object, automatically it will create the parent class. क्योंकि मैंने आपसे इनहेरिटेंस बताया था कि सुपर क्लास पहले होती है, पहले सुपर कॉल होती है। जो कंस्ट्रक्टर आपका होगा किसका? चाइल्ड क्लास का। It calls the super. It is a first line super. What is the super, Wajid Hussain? What is super? Yes, sir. So what is super? Super is a call to the parent class's constructor. So because before you create a child class, you have to create a parent class. Okay. So if you want to create a parent class, that means you have to create this abstract class person. You need a constructor. You definitely need a constructor for that. And you can initialize its own instance variable. Like name equals to name. Now again, this is the shadowing because this local variable name is shadowing this variable name. So I have to use here this dot name. So current object's name is equal to this name. But when this will be called, that is why here now I'm having issues. Why am I having issues? Because constructor is
because there is a constructor here. Now it's the responsibility to call it by the child class because it's a parameterized constructor. Now, if you are extending this person class, it is your job to call it. So I may have here in this student class, say for example, a constructor student, okay, and I may send it two things. I will string n, and maybe I also send it some int roll number. Say it has roll number. Say for example, the student itself has its own variable integer roll number. So what it does is, the first thing it do, the student class is constructor, it's a student constructor. The first thing student constructor do is call a super, means call the constructor of the super class. Who is the super class of this? Who is super class of student? Person. Person. So the person abstract class, its constructor, this will be called, and this n will go into this name, and it will drop that n into its name, the person, and this r is to be sent into the roll number. Okay, and that's it. Do you understand? So therefore we need to have a constructor. We can have a constructor in the abstract class. And now, because we want to instantiate these variables, if there are variables, how we will instantiate them? Nah? So we can instantiate them, either we will instantiate them using the inheritance also. Using the inheritance, we can instantiate them. I can instantiate them here in the student class only. But if I want, because I told you कि जो पिछली बार में डिस्कस किया था कि जब इनहेरिटेंस होती है, जो चीजें ऊपर क्लास के अंदर हैं उनका इंतजाम उधर ही रखना चाहिए, जो चीजें यहाँ पे हैं उनका इंतजाम उधर ही रखना चाहिए, जो चीजें नीचे है, क्योंकि वरना वो जंबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो सारे इनहेरिटेंस करके आ गई चीजें नीचे, अगर आप सबका वहीं पे उनको इनिशियलाइज करोगे, उनको डिस्प्ले उधर ही करोगे, तो वो सारा जंबल हो जाएगा कहाँ, नीचे वाले क्लास में, और ऊपर वाला क्लास खाली रहेगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं, कम अगर मेरा ये क्लास है जो सुपर क्लास है, इसमें कुछ चीजें हैं, उनको इनिशियलाइजेशन वहीं करो, उनका डिस्प्ले वहीं करो, और फिर जो नीचे वाले क्लासेस हैं जो इनहेरिट तो आ गए हैं लेकिन इंतजाम उधर रखे हैं, ठीक है, उनके साथ जो काम करना उन वेरिएबल्स के साथ, वो काम उधर ही रखो ताकि जंबल ना हो नीचे वाले क्लासेस. जो क्लास को अपने अपनी चीजें हैं उनका इंतजाम रखो, और हमने सुपर करके उधर कॉल कर दिया. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने शो नेम भी, जो नेम वेरिएबल है उसका शो भी यहीं पे कर दिया. आई कैन कॉल दिस मेथड बिकॉज ये मेथड भी जाएगा ना नीचे. अगर मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दैट कैन एक्सेस द शो नेम, ठीक है ना. लेकिन इट मेक्स मच सेंस दैट व्हाटएवर इज इन दिस क्लास, कोई भी चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो या नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, अगर इसमें वेरिएबल्स मुझे कुछ है तो उनका डिस्प्ले और उनको इनिशियलाइज करना वो इसी क्लास में करना चाहिए. हालांकि ये आएंगे ना नीचे वाले क्लास में, हम उधर भी कर सकते हैं, लेकिन उससे जंबल हो जाएगा, ठीक है. Same way we have a teacher class here, class teacher extends person. Now it need to apply that super, because constructor को करना पड़ेगा क्योंकि extend कर रहा है ना person class को, और वहां पे हमारे पास constructor कौन सा है, parameterized. So I need to do here, say for example I create of class teacher, there is some double variable salary. Just watch that video properly. Okay, then we are saying what I want to create a constructor of the teacher. What should I say? Teacher, and same string name, and I send it some double salary S. Now what I do here is, in this constructor is, first thing I do is I call the super, which will call the parent classes constructor, parameter constructor, and send it the name. Okay, and this salary itself, S will go into that. The S will go into the salary, and this name will call the super constructor and send a name. That is, you go up, and abstract class is here. This is the parent class. इसका जो constructor है, that is this thing. इसमें ये name में चला जाएगा और वो assign होगा जो variable उसके पास है, ठीक है ना? The same way we did it last time. Okay, now in the main, I am creating, because abstract class person cannot be instantiated, but it can be used for polymorphism purposes. जो हमने कल पढ़ा कि parent class का
रेफरेंस वेरिएबल और चाइल्ड क्लास में डालेंगे, ठीक है ना, हम डालेंगे चाइल्ड क्लास, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल कौन रखेंगे, पेरेंट क्लास. सो वी कैन हैव द abstract class person as a reference variable, okay, and then I can drop into it whatever you want to drop into it. You want to drop into it, say for example what, the child class, whatever the child class is, then say for example you say p equals to new what is that called,